Hi, Namaste. I have not studied this. I will not do that. Arabi. हाँ? नहीं, हाँ? ये सब कुछ नहीं करना. हाँ, ऐसे. And how many seasons do you have played? How many? Huh? Ownership of the team? वो ब्रोशर कहाँ है लगी तो? Where is the brochure? Mic testing. ठीक है. Mic testing. आवाज आ रही है? It's okay. Can you get me the brochure? नमस्कार और RCL 2025 के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबों का स्वागत है. और मंच पर सबसे पहले अपने विषय को रखने से पहले और अन्य सभी लोगों का वक्तव्य जानने से पहले मैं सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा. हमारे साथ बाईं तरफ अतुल वासन साहब हैं जो खुद परिचित हैं और जिनके बारे में क्रिकेट में वी आर अवेयर दैट he has been a very outstanding and a promising player, a bowler, and of course a small stint in films, which of course Dishum was there, and not the very right way to introduce, but there is some, and of course a friend to all members of parliament. So, and his performance in the New Zealand series is always remembered. We have with us Shyam Sundar Agrawal of the Bikaner Group, and he's also owns one of the team here. We'll come back with the team details later. We have Mr. Anand Gupta to my extreme right, the Nathu Sweets. He's also an owner of one of the teams there. We have with us a very renowned chef with all his colleagues there, and as a union representative of International Federation of Culinary Association, representing India, he's the India Federation Chief. Mr. Manjeet Singh Gill is here to my left. Dr. Gurmeet Singh, he owns the Bella Monde Group. He also is an owner of the team. To my right, we have the organizers who have structured this league to come into existence. And I'll be switching between English and Hindi, so I'm sure it would be comfortable for both of you. That is my original assignment in politics, so I can do it very well. I hope all of you understand what I say when I say that. So this, and I have been put as a chair here because basically I had been conducting a lot of exercise on hunger-free India earlier.
But to talk about hunger in India, we have shifted from hunger to nutrition, and that is the small difference. It's not a small difference, it's a very big difference. And ever since free food to 100 crore people has been given, the question of hunger does not exist. But there is, of course, a significant aspect to world hunger. And with the chefs and the restaurant cricket league, which is a part of hunger and culinary displays and support, we try to combine both of it to have a very futuristic approach to a cricket league. The league is not in competition with any other leagues, but when we talk about this as an institution, you would barely come across an individual who has been born, who has not moved out from his home and gone for a culinary treat. And whatever we have in India, with about 550,000 food service businesses, and the food service establishments which we have is roughly about 42 lakhs and could be more, those uncounted ones, which we are the second in the world after China. And I think most of it is in the unorganized sector, which of course definitely has an appetite for food and games. We talk about pubs, bars, but there are people, there are youngsters who definitely have a way attraction for cricket, and that is an appetite for almost every Indian. Going further on that, we have dhabas, we have street stalls, we have hawkers, we have roadside eateries, we have food cafes, and of course, the structured youngsters working in the hotel industry, the five-star hotels, on cruises, on the chefs going abroad, the states having their own special culinary delicacies. It's a chapter which will definitely address hunger, but beyond that, it will also address an aspect of sports which we have taken up. And this time we have, this is the third in the series of RCL 2025. And with luminaries joining this crusade, we decided to hold a press conference and put it at the national map, because RCL is going to move out to the states as well. There have been bid for several states in the teams, and Andhra Pradesh is called Mirchi, Gujarat is called Gujarat Dynamos, Delhi team is called Delhi Dawat, Jammu and Kashmir is called Kawa Kings, Maharashtra is called Modak Manchers, Uttar Pradesh is called Kachori Kings, Rajasthan is called Dal Bhati Devils, and Uttarakhand is called Gulthia. I really do not know the meaning of some of them, like Modak and Gulthia, I would not know. It's a sweet, sorry, I'm just going through it. And of course, for Bihar, there must be some litti chokhata sort of a thing. So I don't know whether, I don't see it there, but it will happen at some course of time. So this is a brief introduction, and I would request the CEO, Abhishek, to give a brief on the subject. So welcome all of you, and I think I have done the introductory part to launch RCL 2025. For years to come, there would be a lot of growth. We already have a lot of interest by people across the country, big chains, and of course, with the visibility what it is getting today in the field of cricket with the subject of hunger, hunger-free India, the skilling aspect of
Millions who want to be great, millions who have to want to become a chef, don't have a means of becoming a chef. In English, we call them a chef. In Hindi, not the right way to put it, but they are small-time halwais. But a better way is when we talk about continental dishes, when we talk about culinary, we talk about pastries, and so forth and so on. It's a different vocabulary, but end of the day, it is taste bud, hunger, and everyone needs it, and an appetite for games. So that is the beginning of today's press conference. Abhishek will carry forward. Thank you very much. Thank you so much, sir. We would start with a short clip of Honorable Prime Minister's Man Ki Baat address, where he addressed the food wastage issue. So, can we have the clip, please? Where is the screen? The whole screen. फूड वेस्टेज के संबंध में I think this would come on that also. फूड वेस्टेज के संबंध में हम जानते हैं कि हम परिवार में भी और सामूहिक भोजन समारोह में भी जरूरत से ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं और फिर खा नहीं पाते हैं और फिर वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं? क्या कभी सोचा है कि अगर जूठन न छोड़े तो ये कितने गरीबों का पेट भर सकता है? ये विषय ऐसा नहीं है कि जो समझाना पड़े, लेकिन फिर भी इस विषय पर उदासीनता एक समाज द्रोह है, गरीबों के साथ अन्याय है। फूड वेस्टेज के संबंध में Thank you. We would start with a quick overview of RCL 2025 and how it is structured, the league formats and the teams. So can we have the slides, please? Okay, so the league schedule, it starts from the 17th with an opening ceremony. It starts from 4 p.m. and it is followed by 2 charity matches. We are honored that the charity matches would feature celebrity chefs, social influencers, and other distinguished invitees who would play these charity matches. From the next day onwards, from 18th to 20th, we have the league matches, which are 12 league matches. So the teams, 8 teams are divided into 2 groups, Group A and B, and every team would play the 3 matches with the other group members. Based on the overall league matches and the ranking, the top 4 teams would move into the semi-finals. The semi-finals is scheduled on 21st February at from starting from 4 p.m. and followed by the grand finale on 22nd from 4:30 p.m. onwards. So in total, we have around 6 days, 8 teams, 17 matches, and 1 mission, Hunger-Free Bharat. Next. A quick stats. So 8 teams. We have a strategic partner, which is IFCA. We have a kit partner, Costco. We have our, sorry, I can't read it, entertainment partners, Radio Mirchi and Ghana. We have mission partners, 5 mission partners, which are the leading NGOs. We have 14 media partners. We have an academic mission partner. We have a social impact partner, which is Adibodh Foundation. And sorry, I can't. So we have around 17 youth ambassadors, 17 social impact ambassadors, celebrity chefs, former Olympian and cricketers. And you have 36 youth ambassadors leading social media influencers from the country. And it's going to be DD Sports is going to be our broadcasting partner, and streaming partner is Waves. We would like to thank all our partners, including our mission partners and media partners. Next.
the state teams. So we have the Jammu and Kashmir Kawas, which is being represented by Nathus. We have the Gujarat Dhoklas team, which is being represented by Balaji Wafers. We have the Andhra Mirchis, which is being represented by the Molecule Air Bar. We have the Rajasthan Dal Batis, which is being represented by Jaipur Adda. We have Uttarakhand Gulthiyas, which is being represented by Bellamonde Hotels. And we have Maharashtra Modaks, which is being represented by Munch Bakeology. We have the Uttarakhand Kachodis, which is... we have the Uttar Pradesh Kachodis, which is being represented by the Constitution Club of India team. Yeah. And there's another slide for Delhi team. The Delhi team is being represented by Bikanerwala. I would now request the chairman to unveil the trophy. The conference is now open to question and answers. We'd like, please go ahead. If someone, आप लोगों में से कोई अगर कुछ मैं आपको वो कागज वापस भेज दूंगा जिसको आपने पढ़ा है मैं आपको बता दूंगा बट मुझे देखना पड़ेगा फिर से ये सब पब्लिक डोमेन का फिगर्स हैं जो आपको दिए गए हैं इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं कुछ और पूछिए मजा आए तो क्या चीज़ का फिर से रिपीट करें जी ये विमर्श के आलोक में ऐसा है कि ये एक नोशनल ये नहीं है कि गिनती करेंगे और फूड पैकेट कहने का है कि जहां ज़रूरतमंद इस प्रकार के होंगे उनको आरसीएल टीम की तरफ से चाहे वो एनजीओज हों स्टेट गवर्नमेंट्स हो और आने वाले दिनों में उसको उस तरह से हम लोग ये नोशनल एक सिंबॉलिक है जिसका कोई काउंटिंग से नहीं है ऑडिटिंग वाला नहीं है ये नोशनल है जिसको हम लोग उसको लेकर करके जहाँ भी ऐसी समस्या दिखती है जिसकी संभावनाएं बहुत कम है उन्हें और ये हमें हमेशा सोचना होगा कि वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम हंगर टू न्यूट्रिशन नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग मोस्टली इज न्यूट्रिशन रादर देन हंगर बिकॉज वी डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ हंगर दीज डेज बताइए ये सब आप मुझे लग रहा है कि सारे इस कॉन्सेप्ट को क्रिकेट के रूप में देख रहे हैं मुझे लगता है थोड़ा सा आप इसको मैक्रो में ले आइए मैं बताइए तो क्या है कि क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ दिस होल इनिशिएटिव डोंट टेक इट सीरियसली क्रिकेट बिकॉज ये है क्रिकेट हैज बीन यूज्ड एज अ व्हीकल टू शोकेस this cause of Hunger Free Bharat and bring these talented people and the hospitality industry under one wing and use cricket to combine it together to get this vehicle going. So I think rules and all, just to make it entertaining because it's a televised thing, people want to see sport. Nobody wants to see a one-sided encounter. किसी को sports का क्या है? क्योंकि sports एक ऐसी चीज़ है, the best reality show दुनिया का जो है ना, वो sports है. क्योंकि कोई script नहीं है, ये नहीं पता क्या होने वाला. तो जब तक वो interest element ना हो, अब वो interest element क्या क्योंकि indoor कर रहे हैं, अब वहाँ पे BCCI के रूल लगाएंगे, तो फिर तो आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा उसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो रूल्स बनाए गए हैं उस स्टेडियम के हिसाब से हमारी कोर कॉम्पिटेंस जो है जो खेल रहे हैं उनके हिसाब से और इंटरेस्टिंग बनाने के हिसाब से तो वो जब आप आएंगे
उसका फॉर्मेट क्या होगा, इट इज ट्वीक्ड अकॉर्डिंग टू द वेन्यू, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उसका मजा क्रिकेट ही खेली जाएगी, पर इन सच अ होलिस्टिक मैनर कि उसका एज भी रहे, कंपटीशन भी हो, और जिस चीज के लिए हम एकजुट हुए हैं उसका मैसेज भी जाए। एंटरटेनमेंट देखिए, अब देखिए अगर आपको बोलता कि हंगर फ्री भारत है और सारे शेफ्स आ जाएं तो मज़ा नहीं था। तो वी आर यूजिंग दैट, बिकॉज आजकल क्या है कि अगर स्पोर्ट्स के को लेके अगर कोई कॉज आगे जाता है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि अब वी वांट इंडिया टू बिकम स्पोर्टी ऑल्सो। रूडी जी कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे आजकल के टाइम में, दिस डे एंड एज, आई डोंट फील एंड आई डोंट बिलीव एंड आई होप नॉट दैट एनीबडी इन इंडिया गोज टू बेड विद एन एम्प्टी स्टमक। बहुत मुश्किल बात है आज जो हुआ पिछले 5-6 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपको याद होगा कि जो ग्रेट फैमिन हुआ था इंडिया का बिकॉज ऑफ विंस्टन चर्चिल्स पॉलिसीज, कितने हाउ मेनी मिलियंस, आई थिंक 2-3 मिलियन पीपल डाइड इन द ग्रेट बंगाल फैमिन। और मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, आपको एक मैं इंस्टेंस बताता हूँ। आई थिंक ये चीज़ को छोड़ देते हैं, मेरी आवाज़ जाएगी। जागरूकता नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ क्या बात हो रही है। देखिए फैमिन की बात हो रही है, आपने सुनी नहीं रूडी जी की बात। ये जो हंगर फ्री भारत है ना, ये एक ऐसा एक अम्ब्रेला, एक स्लोगन है, पर इसको हंगर फ्री ना लेके न्यूट्रिशियस भारत की तरफ जाए। तो मुझे लगता नहीं कि आजकल के ज़माने में कोई इंडिया में कोई भूखा सोता है। बहुत मुझे दुख होगा अगर ऐसा होगा, क्योंकि मैं उस साइकोलॉजी से हूँ। आपको बता दूँ, मैं 110 कंट्रीज़ में घूमा हूँ, और चाइना में अभी क्या है, आजकल इतनी अमीरी आई है, और वहाँ पे मेरे सामने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे 4 आदमी 10 आदमी का खाना मंगाते हैं और वेस्ट करते हैं। तो मैंने पूछा ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि हमारे घर में सिखाया गया कि हम बिल्कुल खाना वेस्ट नहीं करते। तो वो कहते हैं क्योंकि वो इतनी भूख से मरे है, वो चाइना में ग्रेट फैमिन हुआ था। तो अब वहाँ का कल्चर ये है कि वो खाना मंगा के जब वेस्ट करते हैं तो उनको लगता है कि हम अमीर हैं, हम वी कैन अफोर्ड टू वेस्ट फूड, इज द कल्चर देयर। आप समझिए। करेक्ट। जीरो और किसी के, हाँ, हमसे भी कुछ पूछिए। हम उसका लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, और माननीय ये आप कर देंगे। प्रारंभिक स्तर पर बहुत सारे आपको क्या चर्चा, चाहिए? इसको प्रारंभिक स्तर पर उन्होंने पूछ लिया है। आपकी बात में दम है। आगे या प्लीज फिर से फरमाएं। मैं हूं। ये देखिए, दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच वी आर बिल्ड अप। इट्स अ थीम, it's a theme which we have to develop, and that's a concept that we should have something. It's just not money or display. It is something which it has got a cause behind it. So the purpose is that. Yes, please. बजट नहीं है हमारे पास। नहीं, देखिए, आप नेताओं के बारे में भी कुछ इसकी चर्चा कर सकते हैं। फिटनेस पर कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे पास कई सारे सेलिब्रिटी शेफ्स हैं और कई सारे ऑडियंस में बैठे हैं। इन सब की अपनी एक पहचान है, और मैं समझता हूं कि ये कॉम्बिनेशन है। क्रिकेट तो खेल है, लेकिन इसका नाम है रेस्टोरेंट्स क्रिकेट लीग। उसको आप ध्यान में रखें, शायद वो हमारे लिए बड़े अहमियत रखते हैं, जो इस पूरे ब्रांड को और इस खेल को आगे लेके जाएंगे। Am I correct, Dr. Gurmeet Singh ji? My brand ambassadors are them. Cricket, of course, is there. My brand ambassadors are there, and the senior most chefs of the country sitting here. And next time when we are meeting, we'll have the topmost in a more celebrated environment. That we'll tell you after we move on. We'll move on. As we move on, we'll answer more your questions. It's a T10 match.
I'll tell you, we want to. We want to, but at least we are making an effort. I want to know that, particularly as individual, what you do to add to this cause. हाँ, वो बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही एकेडमिक है, बहुत ही एकेडमिक सवाल है, हम लोग उस पर विचार करेंगे। दो एडिशन के बारे में आपके सवाल और अगला कहाँ हो रहा है ये बता। जी, द लास्ट 2 एडिशंस दिल्ली में हुए थे, तालकटोरा स्टेडियम में ओपन ग्राउंड्स में हुए थे। उसमें फर्स्ट एडिशन 2023 फरवरी में हुआ था, उसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 6 रेस्टोरेंट टीम थी दिल्ली की। अगला एडिशन 2024 फरवरी में हुआ था, उसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इसको इस एडिशन में हमने ये we wanted it to grow to a national level, get more stakeholders involved, including the industry stakeholders, the media, the restaurants from various states, and that is to bring everyone together for the larger cause. So this time we have created 8 teams on the states, highlighting the culture of those states, highlighting the cuisines of those states. तो टिपिकली अगर आप किसी भी क्रिकेट लीग में देखते हैं, उनके नाम क्रिकेट लीग्स की तरह ही होते हैं, डायनामोस, किंग्स, बट यहाँ हमने फोकस रखा है खाने पे, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट दिस इंडस्ट्री, इट इज़ अबाउट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इट इज़ अबाउट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, इट इज़ अबाउट आवर कल्चरल हेरिटेज। एंड यू नो, सो ये इस बार ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में है, T10 इंडोर क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट टीम। I must thank the organizers who have conceived this idea, and I must thank all those people who have joined, especially the celebrity chefs of the nation, and the number of queries which we are receiving, as was informed by the management, is immense. Because when we are talking about food, we are talking about culinary institutions, individuals, heads, they are never on the forefront. They only, for a glimpse, they come out and they vanish. They're always in the backdrop. Possibly this is the first time in Indian history they would be on the forefront, and that possibly would be one of the biggest achievements, to see all you beautifully dressed in the white, beautiful chef drop and the backdrop. So this is an idea which is rapidly spreading. It is going very far across the country, and the queries which we are receiving right from Kerala to places like Kashmir is something which is very exciting. And definitely when it moves out in the field, we have an audience, and we have the youngsters of the nation who really would relish what this RCL is developing, and we see a great future with the cause in times to come. So thank you very much, and we have some. अभी तो शायद एंट्री फ्री है, अभी फ्री है। देखिए, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हाँ, मीडिया को खाना भी मिलेगा इसके बाद, ठीक है आपने। वो हमने कहा कि that is an idea which has to be developed. I told you that was an idea which did. Thank you very much. Let's join for a cup of tea. Thank you, Namaskar. आइए, गुरमीत जी। हाँ, ये हाँ एक सेकेंड इसको आइए, ये एक बुक्स को पकड़, एक किताब। Thank you very much.